कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है। मैंने पहले ही तुम लोगों को बता दिया था कि इम्पोर्टेंट है क्लास, एंड ये भी बता दिया था कि काफ़ी रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊंगी मैं। अब यू नो द थिंग इज दैट whenever I start a topic, it is not just one topic, it involves a lot of other topics. वो टॉपिक्स जो तुमने सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आज हम केस लॉज पढ़ेंगे। द केस लॉज आर this year's case laws, the most important constitutional bench case laws, right? तो we are doing about 4-5 of them, और उसके बाद we are doing writs. Now these 4-5 case laws in themselves include a lot of topics. तो चलो आज करते हैं ये सब कुछ। Good evening everyone, how are you all? कैसे क्या चल रहा है? Are you guys practicing regularly? मैं तुम्हें बार बार बता चुकी हूँ, I have told you multiple times in almost every session of mine कि आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस में रहना है, और वो प्रैक्टिस होती रहेगी, राइट? तो भाई प्रैक्टिस, अगर इफ यू रियली वांट टू qualify this exam, if you really wish to excel this exam, कुछ प्रोडक्टिव करना है, कुछ अच्छा करना है, तो हमें डेफिनेटली प्रैक्टिस को रोकना नहीं है। इस बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम, if you double your efforts, especially during this time, it can bear even better results. एंड के टाइम पे बच्चों को लगता है कि अब जो करना था कर लिया, साल भर अगर नहीं किया तो आखिरी 15 दिन में क्या कर लेंगे। ये फीचर उन बच्चों के साथ लगता है जिन्होंने साल भर कुछ नहीं किया, लेकिन जिन बच्चों ने साल भर मेहनत की है उनको आखिरी दम तक मेहनत करनी पड़ती है, वरना वो साल भर की मेहनत खराब हो जाती है, राइट? तो चलो अब शुरू कर देते हैं। ये मेरी सेकेंड लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास मिसलेनियस पे होगी, वो सबसे लंबी क्लास होगी। उसमें आई शैल बी टीचिंग यू एवरीथिंग दैट आई डीम नेसेसरी। In fact, it will be a consolidation of everything that I have taught, जिसमें मैंने हिंदू के एनालिसिस करवाए हैं, पैसेज प्रैक्टिस कराई है। पहले ही मैं बता देती हूँ, बाकी in my short video I'll tell you what I'm going to do in that session. Let's begin. Now the first case, not the first case, these are some factual, there are some facts relating to the Constitution of India. You should know them. तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग असेंबली के? दिस इज फॉर सम रीजन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह क्या है कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनलाइज वर्जन दिया है हमें। सोचने वाली बात है, द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव विद अस वाज बीइंग ड्राफ्टेड बाय what should be the decent score in mock. Himanshi, if you're able to score anywhere between 70 to 80, you are doing well. Okay. If you're scoring above 80, you're doing very well. And if you're able to score somewhere above 95, you are qualifying with a top rank. So this is what the ideal score is. If it is anything below 70 or anything below 65, कुछ कमी अभी भी है, और हालांकि क्वालिफिकेशन इतने में भी हो जाएगा, लेकिन टॉप टियर कॉलेज मिलना मुश्किल है, ठीक है? तो भाई ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को वो फॉर्म दिया है जो आज हमारे पास अवेलेबल है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन BR अम्बेडकर थे, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Constituent Assembly took 2 years, 11 months, 17 days to prepare the draft. Rajendra Prasad, as the president, prepared the draft of the new Constitution of Independent India. Then we adopted the Constitution on November 26, 1949. मतलब all the members of the Constituent Assembly signed or gave their declarations in form of their signatures on the final draft of the Constitution in a manner of approving it. Right, then the Constitution came into effect on 26th January 1950, making India a republic. It is the longest written constitution with these many articles and these many parts and these many schedules. इसको याद करने की जरूरत नहीं है. These are the features. It is the lengthiest constitution. It is borrowed, like obviously it is an amalgamation. It's kind of a research, right? Constitution of India एक research paper की तरह है. तो research paper में obviously किसी और की hypothesis होती है या अपनी hypothesis होती है, आप उसे proof established hypothesis से ही करते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया इजाद कर दिया। नया भी हो सकता है, बट
तो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेड, उस टाइम पे भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस थे, इकोनॉमीज इंडिपेंडेंट थी और डेमोक्रेसीज भी एग्जिस्ट करती थी. तो किस डेमोक्रेसी में क्या अप्लाई कर रहा है, किस पर्टिकुलर राइट को या पार्ट को हम अडॉप्ट कर सकते हैं जो हमारी कंट्री में अच्छी तरह से अप्लाई हो सकता है, ये सब ध्यान में रख के अच्छे से रिसर्च करके किसी का ये पार्ट बहुत अच्छा है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो हमारी कंट्री में बेटर अप्लाई होगा. With respect to constitution, how much weightage does it carry in MHCT? Actually, in MHCT, it is important. ठीक है, ऐसे परसेंटेज वाइज वेटेज तो नहीं बता सकती मैं अभी, क्योंकि मुझे अभी मतलब आई नीड माई फैक्ट्स, लेकिन हाँ वेटेज है. डू यू नीड टू लर्न एनीथिंग? वेल द बेसिक बिल्कुल मोटा मोटा जो क्लास में पढ़ाया था ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली है, फेडरलिज्म कहाँ से लिया है, बिल्कुल वही बेसिक चीजें, वही याद करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं. राइट, वो बेसिक स्ट्रक्चर भी है ना एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. और ऑल्दो उसके क्वेश्चन आने का चांस उतना ज्यादा नहीं है. आई मीन आउट ऑफ 40 देयर माइट बी 1 क्वेश्चन. अगर 40 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, 30-35 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 1 क्वेश्चन आ सकता है इस पे, मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा नहीं. तो अगर 2 आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई बात नहीं. राइट, लीगल रीजनिंग में हमें एक चीज करनी है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने एग्जाम में. क्या है वो चीज? देयर इज दिस वन थिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू इन योर लीगल रीजनिंग सेक्शन. व्हाट इज इट? कैन एनीवन टेल मी? यस एवरीवन प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. What is a decent score in legal reasoning? ये कैसे बताया जा सकता है डिसेंट स्कोर क्या है लीगल रीजनिंग में? सेक्शन पे डिपेंड करेगा ना किस तरह का सेक्शन है. सेक्शन बहुत डिफिकल्ट है तो उसका एग्जैक्टली, वेरी गुड. द फर्स्ट person to answer this was Subhashini, of course, and everyone else is absolutely right. Guessing, तुक्का नहीं मारना, ठीक है? Unless you're completely sure about an answer, you don't attempt it. लीगल रीजनिंग में गैस वर्क ABC वाली जो ट्रिक है जो आपने सीख रखी है वो ये यूज नहीं करनी. दिस इज अ डिटरमाइनिंग सेक्शन. ये आपकी रैंक को डिटरमाइन करने वाला सेक्शन है, आपके सिलेक्शन को डिटरमाइन करने वाला सेक्शन है. दिस इज अ मेक और ब्रेक सेक्शन. इट इज अ टाई ब्रेकर सेक्शन. You can take risk in any other section but not this. You cannot afford to lose marks in this section. So you have to be very, very careful. No guessing work, absolutely not. If you are not familiar with the answer, just leave it. If you do not know an entire passage, if you are not able to solve all 5 questions from one passage, just leave that passage altogether. But do not attempt a question without being at least 98% sure about it. Right? You can do whatever it is that you want in GK maybe, but not in legal. किसी भी section में, but not in legal. Right? So Indian Constitution is a mix of rigidity and flexibility. We know it by the fact that it is quasi-federal, right? So there are some provisions which can be simply amended in the Constitution. There are some provisions which require a special majority, and there are other provisions which require special majority with 50% state ratification. Right, so there are 3 ways in which the constitution can be amended, which makes our Indian constitution a kind of mix of rigidity and flexibility. Then we follow British parliamentary system and not American presidential system. Parliamentary system is also known as Westminster model of government, wherein there is a responsible government and a cabinet system, right? जीके में गैस हो जाता है, हाँ जीके में आप गैस कर भी सकते हैं. Part 3 of the Constitution guarantees fundamental rights. Fundamental rights are the most sacrosanct part of the Constitution. अच्छा मैं आपको बता दूं, I am not going to discuss fundamental rights in this session, just by the way. Right, fundamental rights मैं discuss नहीं कर रही हूँ, but students who are starting from the scratch, who haven't studied Constitution as well, I would tell you to at least go through these fundamental rights. मैं 32 पढ़ाऊंगी आज,
बस उसके अलावा मैं फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़ा रही हूँ. आई हैव टेकन अ नंबर ऑफ सेशंस, आई हैव टेकन many sessions in which I have explained to you the fundamental rights and other parts. There are fundamental rights more or less आप सबने कर ही रखे हैं. बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो मुझे लगता है नहीं किए होंगे. कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस एटसेट्रा, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. 12 to 32, इनफैक्ट इसमें भी 14, 15, 16, 19, 21, 20 भी, 22 एक बार को छोड़ा जा सकता है, 23, 24 भी छोड़ा जा सकता है, 25, 26, 29, 30, ये आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है. 32 I'm teaching you today, so I haven't written it here. This is 30, okay, not 31. So 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 29 and 30. राइट, और बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है. यही सारे आर्टिकल्स आपको काफी हैं. इतने, all these fundamental rights are enough for you to study. Absolutely enough. Along with the doctrines that I'm going to, along with the writs that I'm going to teach you, with few other concepts that I'm going to teach you in this session. बाकी के concepts जो है वो miscellaneous में cover हो जाएंगे. Miscellaneous हो गया, आज का session हो गया, ये articles हो गए, और ये आपकी constitution के लिए काफी है. बिल्कुल 11th आवर पे इससे ज्यादा कंटेंट आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, और इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं. पैसेज कोई भी हो जाएगा सॉल्व. कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट से कोई भी पैसेज आ गया, आप इस तैयारी में उस पैसेज को सॉल्व कर देंगे. आई गारंटी यू दैट. एक मॉक में स्कोर अच्छा आ रहा है, नेक्स्ट में डाउन हो जाता है, बस यही चल रहा है, कोई बात नहीं. हाउ टू गेट करेक्ट इफ एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस, बिकॉज बाकी की 2 ऑप्शन की रीजनिंग बहुत सेम होती है, and you always end up marking the wrong one. That is because you're applying your head and you're not reading the passage. In this situation, I have taught you the trick of solving these kinds of questions. When you're stuck between 2 options and both of them are so similar that both of them are correct, and logically they are actually correct, तो आप उस ऑप्शन को चुनेंगे जो बिल्कुल पैसेज से ही फ्लो कर रहा है, बिल्कुल डायरेक्टली. वो पैसेज का ही पैराफ्रेजिंग है या पैसेज का ही स्टेटमेंट है, मतलब उसे हू बहू या उसे पैराफ्रेज करके पैसेज से उतार दिया गया है, वो ऑप्शन सही ऑप्शन होता है. ठीक है, वो ऑप्शन नंबर दिलाता है, दूसरा ऑप्शन नंबर नहीं दिलाता. गलत वो भी नहीं होता, बट नंबर नहीं मिलते उससे. अप्लाई करके देखिए ऐसे. ठीक है, एंजाइटी इज ऑन इट्स पीक. कोई बात नहीं, एंजाइटी मीन्स दैट यू केयर, राइट, एंड अ लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी इज ओके. अगर मतलब थोड़ा सा डर, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी जरूरी है भाई, उससे पता चलता है कि नहीं मुझे फिक्र है अपनी एग्जाम की, मुझे चिंता है अपने स्कोर की, मुझे चिंता है मैं कौन से कॉलेज में जाऊंगा. और ये बहुत अच्छी बात है. अगर डर रहे हो तुम या एंग्शियस हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है. तुम मतलब यू आर सीरियस अबाउट इट, राइट. बिल्कुल, अगर कोई डर ही नहीं है, बिल्कुल बेखौफ चल दिए एकदम, अरे जो होगा देखा जाएगा, फिर कोई यू नॉट सीरियस अबाउट द एग्जाम, फिर वो भी देखता है कि अरे इसको तो पढ़ी नहीं है, उसको क्या रिजल्ट दो, राइट. तो इट्स ओके, इट्स ओके. इफ यू आर एंशियस, इफ यू आर स्कैर्ड, इट मीन्स दैट यू केयर एंड यू केयर इनफ, एंड दैट विल बी योर रिजल्ट. देखो, डरना कोई बुरी बात नहीं है. कोई, देयर इज नो पर्सन ऑन दिस प्लैनेट हु इज नेवर स्कैर्ड, हु इज फियरलेस. ऐसा कोई आदमी नहीं होता जो डरता नहीं है. बहुत सब डरते हैं, मैं भी डरती हूँ, मैं तो दोपहर में भी डर जाती हूँ, राइट. लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर बता रही हूँ कि डिस्पाइट दैट फियर, इफ यू कीप मूविंग, तब आप निडर हैं. आप निडर तब नहीं हैं जब आप डरते ही नहीं हैं, आपको कुछ भी नहीं डराता. आप एनाबेल के कमरे में यूं ही चले जाएंगे और वो आएगी तो आप हिलेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, आप निडर तब कहलाते हैं, आप फियरलेस तब कहलाते हैं जब बावजूद इसके कि आप डर रहे हैं, आप फिर भी आपके कदम रुकते नहीं हैं, आपकी रफ्तार कम नहीं होती, आप बढ़ते ही चले जाते हैं. डर के बावजूद भी बढ़ते ही चले जाते हैं, उससे कहते हैं निडरता. that person is a fearless person. Be that. Okay, do not worry if you're scared, just continue practicing. आपका स्कोर 19 से ऊपर नहीं जा रहा है,
अगर स्कोर स्टिक हो जाता है तो फिर कोई गलती है जो आप रिपीट कर रहे हो और आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. जनरली बोरियत होता है इसका कारण. यू आर गेटिंग बोर्ड because you're using the same strategy. You're not improvising, you're not really identifying, analyzing, you're just solving and closing it. So you're bored. The redundancy is getting to your head. That is the reason why the score is stuck. Okay. Exactly. Sometimes it's okay to be not okay. Mock score से डरने की जरूरत नहीं है. They're only simulations, not an actual exam. अगर मॉक में आप ऊपर नीचे हो रहे हैं लेकिन ओवरऑल आप 70 से ऊपर ही हैं, उससे नीचे नहीं जा रहे, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. एक मॉक बहुत डिफिकल्ट, मॉक एक एवरेज बच्चे के हिसाब से नहीं बनाया जाता. मॉक्स जनरली थोड़े से ऊपर होते हैं. ठीक है. ओके. हाँ, कहाँ है हम? राइट. तो मैं तुम्हें सिलेबस बता रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का. ये पढ़ना है एंड मोमेंट पे, एट द लास्ट मोमेंट दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू रिवाइज. रिविजन में भी बस इतना ही रिवाइज करना है. इफ यू हैव मेड नोट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड एवरीथिंग, वेरी गुड, रिवाइज देम ऑल. बट इफ यू हैवंट एंड इफ यू आर टू मेक नोट्स एंड देन रिवाइज, आई वुड सजेस्ट जस्ट do not make notes anymore. It's very good if you can revise this much, read this much and you are good to go. हो जाएगी तुम्हारी अच्छी तैयारी और पैसेज भी सॉल्व हो जाएगा. Okay. Right. Now the first case of today that we are going to discuss is 𝗘𝗃𝗃𝗃 versus state of Uttar Pradesh, and we are going to put it as simple as possible. What happened in the case? There were two ministers, one from Uttar Pradesh, one from Kerala. They made some derogatory remarks in UP about some victims who were victims of sexual assault, and also in Kerala. और वो सारे रिमार्क्स जो थे वो women को लेकर बहुत derogatory थे. They were derogatory to women. And then arose the question of the freedom afforded to them under Article 19. अच्छा, अब मुझे कोई ये बताए कि ये दोनों मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, तो these are members of legislative assembly, either at a central level or at the state level. तो जो प्रोटेक्शन मिलती है 105 और कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकल में, वो इन लोगों को क्यों नहीं मिली है? 105 का कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकल कौन सा है? 105 गिव्स प्रोटेक्शन टू एमपीज, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स. एमएलएस को कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्शन देता है? डेली मॉक देना शुरू कर दो, बिल्कुल देना शुरू कर दो. जल्दी से बताओ. नहीं, अभी भी अगर वो करेगी तो कोई बुरा, कोई मतलब शी इज ऑन द राइट ट्रैक. इट्स ओके, यू कैन डू इट. जल्दी से कोई बताएगा 105 का कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकल क्या है? 191, 194. कंफर्म तो कर लो. 191 पक्का? अरे ये तो दो हो गए. टाई. समबडी ब्रेक दिस टाई. अगर नहीं भी आता है तो कोई परेशानी नहीं है. गोपाल has broken the tie by quoting that it is 191 and not 194. क्या तुम लोग 191 इसलिए बोल रहे हो क्योंकि गौरी ने 191 बोला है? जनरली शी इज वेरी गुड विथ फैक्ट्स एंड केसेस एंड आर्टिकल नंबर्स एंड सेक्शंस. It is 194. Yes. 194 ही है. ओके, चलो ठीक है. अब मुझे बताओ, अब क्वेश्चन ये आता है कि आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है. वी नो दैट, राइट? नाउ द प्रॉब्लम दैट द कॉन्फ्लिक्ट दैट अरोज इन दिस केस वाज, yes, maths. The conflict that arose in this case was कि भाई जब आप अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हैं, कौन सी फ्रीडम? एक्सप्रेशन की फ्रीडम को. when you're exercising your freedom of expression and that expression conflicts or coincides or collides with someone else's rights. For example, that person says something which is derogatory to my dignity. वो डेफेमेटरी नहीं है, वो सेडिशियस नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक पर्सनल कमेंट है. लेकिन वो पर्सनल कमेंट किसी तरह से मेरी डिग्निटी को अफेक्ट कर रहा है. द प्रॉब्लम इज कि वो कमेंट
क्रिमिनल भी नहीं है, राइट? तो यहाँ पे अगर आर्टिकल 19 की फ्रीडम डिग्निटी के साथ इंटरफेयर करती है, वो डिग्निटी जो आर्टिकल 21 में दे रखी है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, राइट? दूसरा जो पहला मेरा क्वेश्चन था वो था कि आर्टिकल 19 की फ्रीडम को ही कंसिडर किया जा रहा था. बेसिकली द फ्रीडम दैट वाज, यू नो, द चैलेंज दैट वाज मेड, दोज रिमार्क्स वाज चैलेंज, दे वर challenged in their, you know, on a contention that they are violative of article 21. Okay, अब प्रॉब्लम बहुत सारी आई कि भाई these people are, they made the remarks of course not in their private capacity of, they are ministers, but then whatever remarks they're making are not made in an official capacity. It is a mere remark, it is not really an action which is done in official capacity जो वाकई राइट को वायलेट कर सकता है. शब्दों से अगर राइट वायलेट होता है तो क्या उस वायलेशन को इतना सिग्निफिकेंटली माना जाएगा या डील किया जाएगा कि उसके ऊपर एक केस ही कर दिया जाए? और अगर इसको वाकई एंटरटेन किया जाता है तो क्या आर्टिकल 19 आपको इतनी फ्रीडम देता है कि आप कुछ बोल के किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकें, किसी की डिग्निटी को हर्ट कर सकें, राइट? देयर आर सम वर्ड्स विच आर, you know, which entail a criminal liability because they are hurtful, but then they have to hurt in a certain way, in a certain sphere. They have to hurt a religious sentiment, or they have to hurt something in a similar way, right? But there is no such provision that penalizes a person if he is affecting somebody's dignity by his words, except section 354. लेकिन उसके इंटरप्रिटेशंस बिल्कुल अलग हैं, और यहाँ पे जो हुआ वो 354 में भी नहीं आ रहा था. नीतीश कुमार की बिल्कुल बात ना की जाए. इट विल एब्सोल्युटली ruin my mood and I am in a good mood, so let's not discuss that, man. I cannot believe a state has a chief minister like that. खैर, तो हाँ, अब मुझे बताओ कि आर्टिकल 19 क्यों आ रहा है, 105 and 194 क्यों नहीं आ रहा, since these two people were ministers? Can anybody answer this question? 105 और 109, आर्टिकल 194 जो है वो, you know, they guarantee freedoms to these people, to these category. So to category of people, ministers, MLAs, MPs को freedom देने वाले ऐसे आर्टिकल्स हैं ये. तो ये आर्टिकल क्यों नहीं आ रहा है? आर्टिकल 19 कैसे आ रहा है? मतलब आर्टिकल 19 क्यों कोइंसाइड कर रहा है आर्टिकल 21 के साथ? ये दोनों क्यों नहीं कर रहा है? जो पूछ रही है वो तो बता दो. ये तो मुझे समझ आ गया. As you said, they did not say it in an official capacity. ये याद है वैसे. Does anyone remember article 105? I did teach you 105 when I was teaching you constitution. I mean, my classes I dealt with it. These articles have a very limited application. ये सब सिर्फ inside the legislative assembly. These articles apply only inside the vicinity of the legislative assembly or the parliament. आर्टिकल 105 पार्लियामेंट के अंदर काम करता है और 194 लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उस हॉल के अंदर कही हुई कोई भी बात 105 और 94 प्रोटेक्ट कर लेगा. बाहर नहीं चलता ये, राइट? बाहर तो ये चलता है. हॉल के अंदर अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आर्टिकल 105 आपको बचा लेगा, राइट? तो इसीलिए नीतीश कुमार जो है वो बच गए, क्योंकि इतनी अजीब सी और इतनी दकियानूसी कमेंट को अगर वो बाहर करते तो शायद ये ऑब्सैनिटी के एम्बिट में आ जाता. बट सिंस ही, you know, made that statement in a proceeding or during a meeting, during an assembly, he would be protected under the privilege. Yes. I wish there were no such articles like these. Anyhow, तो आर्टिकल 19 एंड 21 कौशल किशोर का जो मसला ये है, जो कौशल किशोर का जो मेजर इशू था वो यही इशू था कि when there is a conflict between two fundamental rights, what do you do, right? And another situation is these two, even
if they are, you know, public officials, they're not really making the comment in the course of their employment. These are personal comment, personal opinions. Will state be vicariously liable? Or, you know, will the concept of state, Article 12 apply here? अगर आप इनको स्टेट के एम्बिट में लेकर कैसे आएंगे, क्योंकि ये तो पर्सनल कमेंट्स हैं, राइट? आप इनको स्टेट के एम्बिट में कैसे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये तो पर्सनल कमेंट्स हैं. आप मेरी बात समझ रहे हो? लेट्स से कि एक आदमी इज दिस मैन हु इज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड दैट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज अ रेसिस्ट, राइट? एंड ही इज गोइंग somewhere and he's a racist, he's a conservative man and he practices untouchability. अब वो अपनी, लेट्स से कि वो अपनी ऑफिशियल गाड़ी में है और वो अनटचेबिलिटी का कुछ एक हिंट दे देता है जिसे वो ड्राइवर नोट कर लेता है. अब तुम मुझे बताओ, अगर ये केस चलता है, अनटचेबिलिटी का क्लेम उन पे लगाया जाएगा, तो क्या उन्हें स्टेट की कैटेगरी में रखा जाएगा कि भाई साहब ये तो डीएम है और ये स्टेट है, ये आर्टिकल 12 में आते हैं और ये आर्टिकल 17 को वायलेट कर रहे हैं और अब इनको एनफोर्स करवाया जाए? नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है. क्वेश्चन आता है कि क्या आप फंडामेंटल राइट्स को नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल, कैन फंडामेंटल राइट्स be claimed against private entities or private people or individuals, which means that can fundamental rights have horizontal application? This is what the best thing about this case is. Case का judgment कुछ खास नहीं है. It's not a good case, by the way, and it's definitely not a good judgment, right? Exactly, Harshvardhan. Too uncivilized. What is this person writing? Is he promoting a shorts or a short series? Anyhow, so the question was, is it applicable against private entities? Can fundamental rights have horizontal application? इसको horizontal application कहते हैं. फंडामेंटल राइट इस डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं. मतलब ये रहे फंडामेंटल राइट और आप इनको एनफोर्स करोगे ऐसे, और यहां कौन आएगा? स्टेट. तो फंडामेंटल राइट तभी अप्लाई होंगे जब ये जो वायलेटिंग एंटिटी है वो स्टेट के पैरामीटर से गुजरेगी और कोर्ट सर्टिफाई करेगा कि हाँ ये स्टेट है, और जैसे ये स्टेट डिक्लेयर हो जाएगी तब इस वायलेशन को एंटरटेन किया जाएगा और तब ही कोई रेमेडी अफोर्ड की जाएगी. इसे कहते हैं वर्टिकल एप्लीकेशन. इस केस ने हालात ही बदल दिए भाई, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन. एंड इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बात कर रहा है. पहले भी हुआ है ऐसा. इनफैक्ट मैंने अपनी क्लासेस में ही पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट इज लीनिंग मोर टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. कि भाई आप हाँ, तो चलो let's come back to our session. Can we come back to our session, please? रैंडम क्वेश्चंस नहीं चाहिए मुझे बीच में. मैं पढ़ा रही हूं कुछ और तुमने कुछ पूछ लिया, ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है, मैं उनका आंसर नहीं दे पाऊंगी. चलो अच्छा, हाँ, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं. लेट्स मूव ऑन. दिस वाज द इशू ऑफ द केस. So the court's decision was, the Supreme Court said that the freedom of speech, अब ये इसीलिए the judgment is not that great. अब इसमें हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि आर्टिकल 19 जो है उसे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कुछ ग्राउंड्स पे, राइट? All of us are familiar with those grounds. Sovereignty, national security, national security हो गया, of course. Then we have contempt, we have defamation, we have friendly relations with other states,
then we have morality, right? So there are multiple grounds based on which article 19 can be restricted. अब आप सबने अगर आर्टिकल 19 पढ़ा है तो 19(1) में वो सारे के सारे ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं जिनके बेसिस पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा है कि भाई इट इज अ फंडामेंटल राइट वी आर टॉकिंग अबाउट. नाउ इफ वी आर टू रेस्ट्रिक्ट अ फंडामेंटल राइट वी कैन ओनली डू इट ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड्स ऑलरेडी गिवन in. I cannot reply to your question, whoever it is. Number 1, poverty. I'm teaching something right now. इस पढ़ाई को छोड़ के मैं तुम्हारे अलग से क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाऊंगी बच्चे, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इट्स अ फंडामेंटल राइट, अ फंडामेंटल पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब देयर आर मेनी ग्राउंड्स, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं. तो फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस और क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड कर रखे हैं. यू नो दीज आर द ग्राउंड्स ऑन विच योर फंडामेंटल राइट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड. अपार्ट फ्रॉम दोज ग्राउंड्स अ फंडामेंटल राइट, अ सिविल फ्रीडम कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड. एक फंडामेंटल राइट को अगर आप कंसोलिडेट कर रहे हैं किसी भी एम्बिट में तो उस एम्बिट के अलावा आप उसे कंसोलिडेट नहीं कर सकते. आर्टिकल 15 की बात कर लेते हैं. आर्टिकल 15 can be discrimination can be prohibited on certain grounds, sex, race, caste, religion, right? इन grounds पे डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर देता है आर्टिकल 15. लेकिन इसके अलावा अगर कोई ग्राउंड है तो आर्टिकल 15 काम नहीं करता. समझ रहे हो तो मेरी बात? तो यही है फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट करने का तरीका कि भाई एप्लीकेशन जो है वो एक सर्टेन हद तक जाता है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन द एप्लीकेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस इट इज वेरी वेरी लिमिटेड. The application of those restrictions, the qualification has to be in a certain, you know, a limit, because otherwise the entire agenda, the entire purpose of, just give me a second, I don't know why this person is, can you stop spamming, buddy, whoever you are? Please don't spam यार, मत करो यार, ऐसे पढ़ रहे हैं बच्चे, परेशान मत करो. Humble request. Let me try do something about it. Yeah, we are doing it. We are doing it. Just give me one moment. हाँ, we can. चलो शुरू करें. हाँ, तो हाँ, अब हम आते हैं वापस से आर्टिकल 19 पे आ जाते हैं. मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो गई उसकी वजह से. तो आर्टिकल 19 को सर्टेन ग्राउंड्स पे यू ब्लॉक्ड हिम, ओके, बट Article 19 can only be blocked on certain grounds. If any of the ground is not present, basically, if the violation cannot be contained in one of the grounds, then it is not a violation. अगर violation किसी भी ground में fit नहीं किया जा सकता तो वो वायलेशन ही नहीं होगा. अगर कमेंट या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नेशनल सिक्योरिटी को, फ्रेंडली रिलेशंस को, पब्लिक इंटरेस्ट को, मोरालिटी को, कंटेम्प्ट को, डेफेमेशन को, सेडिशन को, जो जितने भी सारे ग्राउंड्स हैं उन सब को वायलेट नहीं कर रहा है तो फिर वो वायलेशन नहीं है, फिर वो एक्सप्रेशन है, और वो एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में प्रोटेक्टेड है. राइट, ये है कोर्ट का जजमेंट और ये है मेजॉरिटी जजमेंट. I understand, Garima. I understand. Chalo, chalo, we have done something about it. I think he's blocked, right? He, she, whoever it was. I just hope that he doesn't log in with another account. It happens. हाँ, ये है कोर्ट का मेजॉरिटी जजमेंट है ये, राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से आए जजमेंट, मतलब 5 जज थे इसमें. 5 judges delivered the judgment and this was the majority.
judgment, and those ministers were held to be exercising their freedom that is given to them under Article 19. Got it? 4-1 quorum, exactly. अब आती है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट पीपल्स राइट नॉट ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट एक्शन बट ऑल्सो फ्रॉम अदर्स लाइक इंडिविजुअल्स और कंपनीज. यहाँ पे ऑफ कोर्स दे what did it ultimately say? Is it applicable horizontally or not? Yes, it is definitely. Freedom of speech or Article 19 and Article 21 were elaborately discussed in this case law. I don't think I have to discuss them with you because you clearly are familiar with these articles. The one thing that really was, impressive in this entire case was the horizontal application of rights. Yes. So a key aspect of this case was the horizontal application of fundamental rights, which means that the Supreme Court, while upholding the freedom that the ministers have, also commented or also held that these fundamental rights are not just applicable against the state. Basically, ये केस एंटरटेन ही इसलिए हो गया. पहले तो जब भाइयों पे इल्जाम लगाया गया कि आप आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहे हैं, तो भाइयों ने सबसे पहले यही तो कहा कि अरे स्टेट नहीं है हम, we are private individuals and article or fundamental rights are not applicable against private individuals, private companies, private entities. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास जब डिटर्मिनेशन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे ऐसे, तभी तो केस एडजुडिकेट हुआ है. And the court said very clearly that it is the state responsibility to make sure that no one's fundamental right is violated. And the responsibility to maintain the decorum or maintain the fact that the violation is not happening is not just against the entities which would fall under Article 12, but also people, entities, institutions, corporations, companies which do not fall under Article 12. तो fundamental rights हर किसी के अगेंस्ट एप्लीकेबल हैं. आर्टिकल 12 जो है वो रिडंडेंट होता जा रहा है, इसलिए तो ये केस आगे बढ़ गया, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वरना आता ही नहीं, वरना डिसमिस हो जाता. भाई दे आर नॉट अंडर आर्टिकल 12. समझे? अगर आर्टिकल 12 नहीं होता तो शायद इन पे क्रिमिनल केस लग जाता है, लेकिन क्रिमिनल केस से भी क्या ही होना था, देयर मिनिस्टर्स. Okay, so this was what happened. Conflict, तो I discussed with you the conflict. One beautiful thing that happened in this judgment was Justice Nagaratna's view. B.V. Nagaratna's view is very significant. It is significant for many reasons. She emphasized on dignity very, very clearly. She said that, it is very important that the aspect of dignity is taken seriously under Article 21. It is underrated and uninterpreted. I mean, we have interpreted it to a lot of extent, but it remains, it is so vast, it is so expansive कि उसे unimaginable, मतलब उसे imagination के beyond interpret किया जा सकता है. तो ऐसी सिचुएशन में आप जब डिग्निटी एक इतना इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है एक राइट का कि वो कितनी भी एक्सपैंड हो सकती है, कहीं तक भी जा सकती है, वहां पे आप एक राइट के चलते उसे लाइटली नहीं ले सकते. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई थिंक आई मेड इट टू कॉम्प्लिकेटेड. Just because a person has a right to freedom of expression doesn't mean he can affect or hurt someone's dignity. Just because dignity is not really a restriction given under Article 19 doesn't mean that it can be flouted away with. It can be taken lightly. It can be, just played with like that. No. It is to be taken seriously as you're taking Article 21. ये एक बहुत important aspect है. Dignity restriction नहीं भी है, फिर भी dignity हर right से ऊपर है. और अगर एक आदमी अपने right के exercise के चलते किसी भी बहाने से किसी dignity को affect कर रहा है, तो वो violation होना चाहिए. This was the dissenting opinion. तो सोचने वाली बात है. Protection from
हेट स्पीच, हर पर्सपेक्टिव सजेस्ट कि भाई एक फ्रेमवर्क जहाँ पे हेट स्पीच स्पेशली अगेंस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी में परमिट हो जाता है तो हम किस तरह की सोसाइटी में रहेंगे। एक काले आदमी को काला बुलाना परमिसिबल है, एक मोटे आदमी को मोटा बुलाना परमिसिबल है, किसी भी तरह का डेरोगेटरी रिमार्क मारना करना का परमिसिबल है। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और उस एक्सप्रेशन के चलते आप कुछ भी बोल सकते हो। और डिग्निटी क्योंकि ग्राउंड नहीं है तो आपको किसी भी तरह की पेनल्टी में आप पर इम्पोज नहीं की जा सकती। वहीं पे गवर्नमेंट इतनी सेंसिटिव है कि जब लोग एक्चुअल डेमोक्रेसी में अपने राइट्स को प्रैक्टिस करते हैं और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, वहां पे सेडिशन के ग्राउंड पे उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये कोर्ट इतनी ज्यादा ओवर सेंसिटिव है कि एक रिमार्क अपने अगेंस्ट नहीं सुन सकती और कंटेम्प्ट लगा देती है तुरंत। तो एक आम सिविलियन कैसे अपनी डिग्निटी क्लेम ना करे? अगर गवर्नमेंट की डिग्निटी है, कोर्ट की डिग्निटी है, तो डेमोक्रेसी में सिटीजन की डिग्निटी तो सबसे ऊपर है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिटीजन के लिए है, फॉर द सिटीजन, बाय द सिटीजन, ऑफ द सिटीजन। तो यहाँ पे कोर्ट की डिग्निटी, गवर्नमेंट की डिग्निटी तो एस्पेक्ट है ही नहीं। कंटेम्प्ट, सेडिशन जैसे ग्राउंड्स होने ही नहीं चाहिए। अगर आर्टिकल 19 को आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो कंटेम्प्ट पे मत करिए, डेफेमेशन पे मत, सॉरी सेडिशन पे मत करिए, उसे डिग्निटी पे रेस्ट्रिक्ट करिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये एक वैलिड ग्राउंड होगा, ना कि कंटेम्प्ट या फिर सेडिशन। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, नागरत्ना का नहीं है, ठीक है? नो, आई सेड इट, शी डिडंट से इट। यू कैन रीड हर ओपिनियन, जस्ट टू क्लैरिफाई कि मैंने कॉपी नहीं किया, ये मेरा अपना था, मैं भी पढ़ते पढ़ते इंटरप्रेट करती हूँ भाई। ठीक है, चलो। एग्जैक्टली, सिटीजन एटमोस्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए। बहरहाल उनका बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस था। शी गेव अ वेरी प्रोग्रेसिव अप्रोच टू कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, स्पेशली विद रिगार्ड टू डिग्निटी। अक्सर ऐसा होता है कि डिसेंडिंग ओपिनियंस मेजॉरिटी ओपिनियंस भी बन जाते हैं, राइट? तो हो सकता है ये भी बन जाए। अब हम आते हैं शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन केस, क्लैरिटी एंड कंटेक्स्ट। अब आई थिंक आई डिड डिस्कस दिस केस। I cannot provide you with a PDF, Namra. This is a YouTube session, sweetheart. अब I wish मैं YouTube पे ऐसा कर सकती, but मैं नहीं कर पाऊंगी। Thank you so much, Krishna. लास्ट टाइम पढ़ा था, लेकिन आज हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। मैंने इसके फैक्ट्स नहीं बताए थे, राइट? हमने इसको फैमिली लॉ के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा था। सो अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। वरुण श्रीनिवासन की एज है 89 इयर्स। शिल्पा शैलेश जी की एज है 82 इयर्स। ठीक है, दीज आर द फैक्ट्स। वरुण जी 89 इयर्स के हैं, ही इज क्लोजिंग इन ऑन 100 एंड शिल्पा शैलेश इज 82, शी इज ऑल्सो क्लोजिंग इन ऑन 90। लगभग 100 साल जी चुके हैं ये लोग अपनी जिंदगी के, लगभग, राइट? वरुण श्रीनिवासन और शिल्पा शैलेश बहुत साल से एक साथ नहीं रह रहे हैं, और अब बिल्कुल मतलब बुढ़ापा भी जाऊं जाऊं हो रहा है। नहीं रह रहे, ये नहीं है केस में है, ठीक है? क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, बट ये नहीं है। वरुण श्रीनिवासन ने डिवोर्स फाइल किया। सामान क्यों गिराती हूं मैं? Varun Srinivasan applied for divorce on a ground of irretrievable breakdown of marriage. Previously, I told you in family law कि irretrievable breakdown of marriage was not considered to be a ground for divorce. It was considered an aspect wherein marriage could be dissolved, लेकिन उसे एक separate ground के बतौर कभी नहीं लिया गया। Later on, when privacy was given, I'm so sorry, I will use English only. So later on, when privacy was given more significance, it made its way into the constitution, became a fundamental right and whatnot. Suddenly, irretrievable breakdown of marriage became a very important ground, and it became a separate ground of divorce.
Now they, provided a separate structure for this ground, that if you want to dissolve your marriage, because there's always an element, or there's always a possibility of reconciliation. Marriage in India is considered to be a different institution altogether. It's a bond that lasts for 7 births. Oh my God. Right, especially, by the way, it is a very sacred bond, not just in one religion, in every religion, right? No. So courts also consider the aspect of reconciling the couple, because they favor reconciliation instead of breaking it. Over the time, the courts have realized, yeah, who are we to interfere? If they want to stay away, if they want to dissolve the marriage, let them. Why are we trying to reconcile them? I mean, we are not, what are they doing to us? Even if they reconcile, what good would it do to us? Right? And how would it affect the society? I mean, if marriages are breaking in a society, if marriages are surviving in a society, it doesn't really affect the society if you think about it. In a society where the, percentage of divorces is high, or the percentage of marriage survival is high or low, society on a broader perspective doesn't get affected because of this, because of a personal choice, right? Enforcement of a decree, yes. Irretrievable breakdown is under 13B, not under Article Constitution. Let's study. So they decided that irretrievable breakdown needs to become a separate ground. Now, there are certain conditions. You have to be living away from each other for more than 2 years, and then the situation in which you are applying to dissolve your marriage almost instantly, because the marriage, there is no point of reconciliation. You cannot reconcile at any cost. So just, end the trauma, end the marriage. That's what this is. So generally, when people apply for divorce, there's a process that follows, and the divorce is not given in that very instant. It takes time. But if you are applying for divorce under this ground, report is given to you almost immediately, in a matter of a month or 2. But then the divorce plea has to come from both the parties. They both have to, speak. They have to be giving consent to the same thing, that yes, we cannot live with each other. And that's how the court will decide that yes, the marriage is actually truly broken for good. Now, in this situation, what happened was Varun Srinivasan wanted to divorce. He's already 100. They've been living away for decades. But Shilpa Shailesh said, I do not want divorce. Now, the court asked her, do you want to get to him? Like, do you want your marriage to survive? Do you want to stay married to him? To this, her answer was, in this old age, I do not want to be labeled as a divorcee. That's what her contention was. कि बुढ़ापे में मैं नहीं चाहती कि समाज मुझे तलाकशुदा बुलाए. अब ये भाई, of course, it might be funny to us, but if you think about it from a point of view of a woman who's 82, she's not an empowered woman. She's very old. She comes from a different age altogether. She does not share the same progressive attitude. She might, but not that much, obviously. In that age, they might not want that, right? So the thing is ki bhai, the ground of dissolving the marriage came from one party. This was the case. This is where Article 141 and 142 was applied. Okay, so Srinivasan wanted divorce. Shilpa Shailesh did not want divorce. The marriage was completely broken. There was no point of conciliation. I mean, they could not reconcile. On what ground would they reconcile? They were already on their, on the verge of meeting with the fate, and कितनी जिंदगी बची थी उनकी, ठीक है? कज़ाए इलाही होने वाला था बहुत जल्दी. तो क्या ही करते? यहाँ पे कोर्ट ने सोचा कि भाई अब what should we do? The consent is not coming from both parties. So 13B in a practical sense or in black letter law does not really apply, because it says that you should be living away from each other for more than an year. So 2 years has been reduced to an year, but the consent
situation remains the same, which means that, you know, both the parties need to apply for divorce mutually. One party cannot apply for divorce on this ground. Both parties, they obviously, the irretrievable breakdown of marriage means the marriage is not working, and this has to come from both parties. There are two people in a marriage, right? One cannot decide that my marriage is not working. It is inequality. The court was in a fix. They sought a waiver of the 6-month statutory waiting period, citing an irrevocable breakdown of their marriage. This is what Srinivasan did. Not anymore. Not anymore. These were the legal questions that were raised. It brought up very crucial legal questions, including the extent of Supreme Court's power under Article 142. Then whether court can waive the 6-month statutory period under Section 13B. They wanted the divorce immediately. Just end the marriage right now. I don't want to stay married. I don't want to be her legally wedded husband. The ability of the Supreme Court to grant divorce even against the wishes of one spouse in cases of irretrievable breakdown of marriage. Does everyone understand? Does everyone understand this? From a constitutional point of view, it is quite a, you know, liberation if you think about it. I'm assuming that it is clear to everyone. Should I just move on? Okay. So these are the key points of the judgment. The divorce was granted. Yes, the divorce was granted. How cool is that? Right, the judgment clarified the broad scope of Article 142, which allows Supreme Court to do everything necessary in order to impart complete justice. So if they are to impart complete justice, they can do anything. They can come up with any law. They can create a law. They can create a procedure. They can come up with any decree or judgment, and that is what they did. They granted the divorce even when both the parties had not applied for the divorce, and they used their powers given to them under Article 142. Right. So this was the case. You can read the rest. Right. Waiver were also given. The same powers were used. Moving on. Quashing of related legal proceedings. This is more related to family. I just know what? Her side was valid. Well, I mean, she did not want to be in a marriage also. I mean, she did not want a label. That's it. Yeah, I don't want to be called a divorcee, but I also don't want him as my husband. I don't want to stay with him. So this is more on the family side. You can read it if you want. Now comes Subhash Desai versus Principal Secretary Governor of Maharashtra. So guys, I'm not discussing the summary of the case. You understand the summary of the case. I'm not going to discuss this case in very detail also. Right, this is more like a homework. Towards the crash, I am only to give you the relevant material. You are supposed to read it on your own, because teaching, I think I have done. I've been teaching you everything for an entire year. I have given you the facts, everything right from 2019, what happened. 𝗚𝗲𝗃𝗃, Shiv Sena leader, became this chief minister in an alliance government. I told you in a detailed session how this thing actually worked, right? I have taken a session on this. मैंने passage भी practice करवाया, and I have taught you this. So I told you what exactly happened. How do you make an alliance, or you know, गठबंधन सरकार कैसे आती है? Everything has been discussed. Now one group, or Eknath Shinde, he did not approve the alliance of NCP with Congress. No, but yeah, okay. That actually makes sense. It's so hot, I cannot even switch on the AC. I start coughing. Right, so this is what happened. Eknath Shinde eloped with certain MLAs, and without their support, the government became unstable, obviously, and the Supreme Court interfered, and the Supreme Court wasn't supposed to interfere because this is an unusual practice. The
the government is becoming unstable, there is a procedure separately to deal with that. And the procedure is not of Supreme Court to interfere, because it would be like the judiciary interfering with the executive, which constitution any which way does not allow. Right? So this was something which was unusual. Supreme Court interfered and they granted the rebel group 12 days to respond to the disqualification notice. And they actually challenged the disqualification notice. और 10-12 दिन दे गए, चलो उसको response क्या होना चाहिए तुम्हारा. The rebel group withdrew the support from the alliance, and Thackeray resigned because obviously he lost the majority. Then the case was referred to 5-judge constitution bench. The hearings began in February 2023. February 17, 2023, the ECI allotted Shiv Sena name and symbol to Shinde's faction, and the defection began on 21st February 2023. Right. So this was what happened. If you want to read it in detail, you can just Google the case, or something related to this with my name, and I would appear on YouTube. And I have, of course, discussed the entire story in detail. You can watch it, or you can just read this. You don't have to be very, very familiar with the facts. Okay. Now, the key concepts that we are supposed to get familiar because of this case is the 10th schedule. What exactly is the 10th schedule? We know what 10th schedule is. It is the anti-defection law. Now, in the democracy, we need a certain majority to form a stable government. Right? The majority has to be above 50%. Anything below 50% cannot form a government. So, let's say that, we have 100 seats total in the legislature. A party has to win over 50 seats in order to make the majority government. Anything less than 50, even 49, means that the party does not have enough support and they cannot form the government. Now, the second government, the second party, which received the second highest vote, would come into picture. Together, they would form a coalition government. समझ गए? फिर से समझा देती हूं मैं. लेट्स से कि लेजिस्लेचर में 100 सीट्स हैं. किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट सरकार बनाने के लिए 100 में से 50 सीट्स अपने लिए चाहिए. मतलब उनके 50 कंस्टिट्यूएंसीज उनके कैंडिडेट्स ने जीत ली आउट ऑफ 100, तब वो सरकार बना पाएंगे. 51 एक्चुअली. वेरी गुड. यस, आई एम सो सॉरी. 51, 50 प्लस चाहिए. राइट. 51 से अगर थोड़ी सी भी कम होती है, मतलब 50% से थोड़ी सी भी अगर कम है, तो सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है. आपके पास मोर देन हाफ लोगों का या कंस्टिट्यूएंसीज का सपोर्ट नहीं है. तो सेकंड हाईएस्ट जो पार्टी होगी जिसने सेकंड हाईएस्ट कंस्टिट्यूएंसीज जीती हैं, आप उसके साथ गठबंधन करोगे. और गठबंधन के बाद अगर आप कि दोनों के गठबंधन से सीट 51 प्लस हो जाती हैं, तो आप सरकार बना लोगे. गठबंधन also has to result into more than 51 seats. Right? So, the moment coalition becomes more than 51, that coalition government is formed. Now, the thing is that majority, the entire thing works on majority. How many constituencies do you have? अब let's say I am a member of a certain party, and that party exactly has 51 constituencies. That party has 51 constituencies. They formed the government with a bare minimum mark. Ab I represented that party, and because of that representation, of maybe because of my own aura or my own name, I won the election. I won from that constituency. I am one of their members of the parliament, or I am one of their legislators, right? I might not be a minister, I might not have a portfolio, lekin I am a member of the parliament. I do not like the party because they're not giving me a portfolio. Another party promises me that if you join our party, we'll give you a portfolio, we'll make you a minister. This man will never make you a minister. Now I defect. I move from this party to another party. I was a part of ABC. I decide to become part of XYZ. The moment I leave this party, their majority becomes 50.
the government comes to a halt. Now the minister, the prime minister or the chief minister has to resign because they have lost the majority. This kind of situation creates an instability in governance, and that is something that cannot be allowed. And this is the reason why defection is taken so seriously, right? So Aya Ram Gaya Ram is a very interesting case. You want to study about it, you want to read it, you can just, you don't have to read it right now, maybe after exams. So 10th schedule expressly prohibits this. The moment you decide to defect, your constituency will be taken away from you. You are no longer the minister. That constituency will remain with the party. You do not have that constituency anymore. So if I decide to become part of XYZ party, let's say that I won from Raebareli. Raebareli is not mine. I lose Raebareli the moment I join XYZ. But Raebareli remains with ABC. So the stability is maintained, but my move is penalized. That is how the defection works in India. What regulates this? 10th schedule. It was added by 52nd Amendment in 1985, right? So it lays down the process and grounds for disqualification for members of parliaments and state legislative assemblies. Now, in this situation, the court does not interfere. That is what the thing is. That is why what happened in Eknath Shinde or Subhash Desai case was unusual. The matters of disqualification or the everything related to, I'm not from Raebareli, no. Everything related to disqualification is to be handled by speaker or chairman, depending which house the minister is coming from. So if the minister is coming from Rajya Sabha, the chairman of the Rajya Sabha, that is the vice president of India, will take care of the matter. He'll decide whether or not the person needs to be disqualified. If that member is from Lok Sabha, the speaker will decide whether or not that member needs to be disqualified. Whatever proceeding there should be, providing, issuing a show cause notice or asking for a response or anything like that will be done or taken care of by the speaker or the chairman respectively. The courts do not interfere, but they did in Subhash Desai case. Right? Judiciary interfered with executive. Very unusual. Does not happen. That is why the case became so significant. Then the speaker's role, powers and disqualification proceedings. You can read it on your own. Nothing to explain here. Judicial review is something that you're very, very familiar with. Which amendment took away judicial review completely? And what restored it? Homework. Okay. Judicial review, what judicial review is? Basically interpreting as per the constitution. So examining the provision or the violation as per the constitutional norms is what judicial review is. To decide whether or not a provision or an act is as per the constitution is the power of judicial review. In simple words. Yes, one answer is completely right. The first answer is right. Governor's discretions and powers, again something which is more on the Indian polity side. I'm sure you have already read it. Just go through it once. Right? Just go through it once. You do not have to cram it. There's no concept. This is only fact. It's a factual information. You just have to read it once. That's it. Now we have Messrs. Trimurti Fragrances versus Government of NCT Delhi. Guys, this is also your homework. Because this case is not really popular, but it definitely is establishing something relevant. It is discussing two doctrines that I thought you should know about. Judicial precedent. Basically, the case is significant because it addresses the complex issue of overruling earlier decisions of the Supreme Court of India and explores the principle of judicial precedent and stare decisis.
right? So the significance of a Supreme Court judgment and the applicability of it as a law throughout the country is what was discussed in this case. How does a Supreme Court case gets overruled? In what situation can a Supreme Court case be overruled? Who can do it? How can it be done? Everything was discussed in this case. I think I have already discussed it with you. मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, ठीक है? तो प्रीसिडेंट वही है, you know, a decision by a Supreme Court. I'm so sorry. Before I start coughing. Yeah. A decision by a Supreme Court is held to be a law, right? So if the Supreme Court has ruled something and a similar case comes later on, like the similar facts, similar issue, then the ruling of the Supreme Court will be followed as law, even if it is a bad law. Right, that is what precedent is. So Supreme Court judgment have precedential values all over the India, all over the country. Then High Court's judgments have precedential value only in that particular states. Right, Supreme Court's judgment works as precedent in all the High Courts also. So if at all a district court has to go for a case which has different rulings by High Court and then the Supreme Court, obviously they would have to follow the Supreme Court. इसे प्रिंसिपल इस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीसिडेंट एंड स्टे डिसाइसिस कहते हैं. बहुत कुछ डिटेल नहीं है इसमें, यू कैन रीड इट ऑन योर ओन. अगेन वेरी वेरी फैक्चुअल. These are constitutional provisions. Article 141. The article Indian Constitution states that the law declared by the Supreme Court is binding on all courts in India, emphasizes the importance of the Supreme Court as precedents. Article 142 grants Supreme Court the power to make necessary orders, exactly what we discussed in 𝗘𝗵𝗀𝗃𝗃 case. Then we have horizontal and vertical applicability. Judgment that and decisions or judgments that are decided by larger bench have horizontal application and vertical application, which means if it is a constitutional bench judgment given by more than 5 judges, then it will apply all over the India. Right, it is applicable to all the benches in the Supreme Court which are lower than 5 or equivalent to 5, and also the courts in India, all the lower courts in India. Vertical means applicable to higher authorities only. Only the high courts, not the lower courts. They can come up with their own interpretation. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, अब दिस इज समथिंग दैट आई एम श्योर यू डिड नॉट नो अबाउट. Constitutional bench judgments have horizontal application. They apply everywhere, here and there, left and right. But if it is a judgment which is maybe given by a single bench or a 2-judge bench or a 3-judge bench, 4-judge bench, then it only has a vertical application, which means it will only apply to the high courts, but the lower courts are not under a mandate to follow it. Okay, this is the vertical application. Right to freedom of religion is something that I want you to study on your own. ये important है, मैंने बताया भी था कि 25 पढ़ना है, तो इसको पढ़ लेना. मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ इसके, मैं writs पढ़ाना चाहती हूँ. Let's discuss the writs. So we have 5 writs that are given to us under Article 32. Habeas corpus, mandamus, prohibitions, certiorari and quo warranto. What exactly is habeas corpus? Habeas corpus is a Latin term which means to produce the body. Now, all of us know what Article 21 lays down. What does it lay down? Can anyone tell me? When the hall ticket be released? I think admit card आ चुका है, नहीं आया क्या? But the moment it comes, we definitely would tell you. We would be the first to tell you. Don't worry. ठीक है, सबसे पहले बताएंगे हम आपको. Article 21. Can anyone give me the text of Article 21? No one? To have the body, right to life and liberty. Yes. Admit card on 20. That is not what Article 21 says.
A person's right to life and personal liberty will not be curtailed except with the procedure established by law. This is what Article 21 lays down. This is what Article 21 says. Which means that a person's dignity and personal freedom cannot be interfered with unless and until you are following a proper procedure. A procedure which law has provided for. Right, black and white, absolutely, in a way it is provided. The moment you transgress, the moment you distract yourself, the moment you miss a step, the detention becomes illegal. The moment that detention becomes illegal, a person can file a writ of habeas corpus. Habeas corpus is a writ which is filed against illegal detention. Illegal detention is a direct violation of Article 21. आर्टिकल 21 का डायरेक्ट वायलेशन है ये, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? 21 को आएगा, चलो ठीक है। एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यस। Right, so this is what habeas corpus is. Now, unlike all the other writs, a habeas corpus is not just available or applicable against the state, but it is also available and applicable against private individuals or people who are not states. Right, and also the rule of locus standi is relaxed in this, which means a person can have somebody else file the writ of habeas corpus on his behalf. अगर मैं जेल में हूँ और मेरी डिटेंशन इलीगल है तो मेरे बिहाफ पर कोई और मेरे लिए ये writ फाइल कर सकता है. The moment that writ is filed, the custody in question is put forth the court. The court will examine if the custody was legal, and the person who was responsible for that custody will have to show or justify and prove that the custody was legal. And if he is not able to prove that the custody was legal, he has to release that person immediately with immediate effect. तुरंत काम करती है ये writ. Right, so this is what habeas corpus is. If someone believes that they are being held in a custody without proper legal authority or without proper procedure established by law, then they can challenge that custody using the writ of habeas corpus. Okay. Then we have mandamus. Mandamus basically is a command. So when a Supreme Court आंसर की रिलीज नहीं हुई है, give me a moment. बोल दिया है मैंने, हाँ. So mandamus basically is a command that is issued by the apex court to everyone. It can be issued to public officials, courts, lower courts, government's authority, to compel them to do something which they are supposed to do, or to compel them not to transgress or do something which they are not supposed to do. तो अगर एक पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप उससे एपेक्स कोर्ट से कंपल्जन दिलवा सकते हैं मैंडेमस के थ्रू. अगर वो अपनी ड्यूटी फुलफिल तो क्या कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो अपनी पावर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ट्रांसग्रेस कर रहा है, लोगों को टॉर्चर कर रहा है, तो भी आप मैंडेमस को यूज करके उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि तुम पावर्स ट्रांसग्रेस मत करो. तो बेसिकली अपने पावर के दायरे में रहने के ऑर्डर को मैंडेमस कहते हैं. It is a command that the court issues so that people are moving in line, so that they're staying in line. They're doing what they're supposed to and they're not doing what they're not supposed to. Very, very simple. Mandamus has a limited application. It can only be exercised or enforced against entities that fall under the definition of state.
ठीक है, they can only yeah. Got it? Yes. Chalo. Now we have prohibition. What exactly is prohibition? Prohibition is a writ used to prevent lower courts or authorities from exceeding their jurisdiction or acting beyond their legal authority. Now, sometimes it may happen that, you know, I have discussed with you the jurisdictions, or the kinds of jurisdictions. We have territorial, we have pecuniary, we have subject matter jurisdiction. Now, there might be situations in which a court is trying to transgress their jurisdiction. Right? So, while they are in the act, in between, let's say that there is a case going on. Okay, A versus B. It is being handled by XYZ court. The matter is that of family, and XYZ is an income tax tribunal. They are not empowered to take up this matter, but they did anyway. Now, one of the parties, B, challenged this. While the case is still pending, while the judgment has not yet come out, the court will stop them in between. ये तो बहुत ही extreme example ले लिया मैंने, लेकिन generally ये pecuniary और territorial पे लगता है. So when a court is about to transgress their authority, when they're supposed to act in a manner they cannot act, they do not have the authority, and the court stops them in the middle, the court stops them, prevents them from transgressing. That is what we call prohibition. The writ which stops that case in the middle, it stops that court or tribunal before it can transgress their authority or act in a manner they are not supposed to. Right? तो ये बीच में, केस को बीच में ही रोक देता है. Before the final order. Yes, it is before the final order. Very good. Certiorari is somewhat like prohibition. Prohibition basically works when the case is still, you know, in the middle. It has not been finally adjudicated. It is still going on. So before a judgment can come out, the person is stopped. But certiorari is a little too late, right? So the moment judgment comes out and that judgment is not as per the jurisdiction, that judgment is being given in the excess of jurisdiction, then that judgment, that final adjudication is cancelled because the court has transgressed its powers. To cancel a judgment which is being given in an excess of the jurisdiction is cancelled. And how do we cancel it? How do we get it cancelled? We get it cancelled using the writ of certiorari. तो prohibition में और certiorari में ये अंतर है. Certiorari end में apply करता है जब judgment आ गया. अब judgment को हटाओ भाई, right? Exactly, Shubhra, very good. So certiorari is a corrective writ. You are correcting something which should not have been there in the first place. This judgment cannot exist because it comes from an authority which was not empowered to give it. Right? So you do not want to make it a law. You do not want it to apply on anyone. You cancel it. You declare it to be null and void. Prohibition, on the other hand, only works in the middle. So before court can do something which is not allowed, which is not correct, you just end it in the middle. Right? ये difference है दोनों में. Quo warranto is basically a question. By what authority? So if a person is holding a position or a post and his authority is not confirmed, he's not doing it lawfully. He's continuing with the position, he's doing something or he's continuing an office that he's not supposed to. His authority has maybe ended. But everyone understands what, Pradhan Pati. If you have understood, if you have heard about this practice. So, the Panchayati Raj or the local governments were the first to reserve seats for women. After, अब देखो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर्स पे तो आया भी नहीं. सबसे पहले रिजर्वेशन वुमेन का लेजिस्लेशन मतलब लॉ मेकिंग में लोकल गवर्नमेंट में ही लाया गया. तो पंचायत में सबसे पहले सीट्स रिजर्व की गई थी. राइट. अब पंचायत में जैसे ही महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व की गई वैसे ही लोगों ने अपनी अपनी स्त्रियों को खड़ा कर दिया
इत्तेफाकन वो जीत भी गई. So there were many women who became pradhans and everyone. Now these women are not really educated. They're not really, exposed enough to take on a government. They are being underestimated, of course. Even an uneducated woman is an empowered woman, right? तो अब यहाँ पे क्या होता है कि instead of making them familiar with the office and getting them to train what she's supposed to do, the husband takes over and he starts acting on her behalf. Now he does not have the authority. He's working, he's exercising a power that the constitution has not even given to him. He is not elected. He did not even contest. It was his wife who won the elections, but he's acting on behalf of his wife. He's not supposed to do something. The moment his authority is questioned, it will be questioned using this writ. You are acting like a pradhan. You are exercising the powers given to a pradhan. You are making decisions that a pradhan should be making. You are utilizing the funds that are given to a pradhan. And you are doing it by what authority? That is what quo-warranto asks. Article 32 is a fundamental right, which means mandamus, habeas corpus, certiorari prohibitions are fundamental writs. They can be claimed as a matter of right, except this one. This can only be given at the discretion of the court. We are questioning somebody's job. We are questioning somebody's livelihood. And court does not really want to question it, interfere with it until the situation is actually extreme. Until the interference has become imperative. You getting what I'm saying? यहाँ नौकरी का मामला होता है, ठीक है? आपके पास 1 महीना है तैयारी. 1 महीना कहाँ है तैयारी के लिए? कौन से एग्जाम की तैयारी के लिए 1 महीना है तुम्हारे पास बच्चे? 3 तारीख को एग्जाम है, 16 तारीख है आज. 1 महीना नहीं है. ठीक है? You don't have a month. ओके. हाँ, राइट. तो कहाँ थे हम? डिस्क्रेशन. अब यहाँ पे किसी की नौकरी की बात आ रही है. तुम किसी की नौकरी को, किसी के रोजगार को क्वेश्चन कर रहे हो. और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ऐसा नहीं किया जा सकता. रोजगार मुश्किल से होता है लोगों के पास. तो इसीलिए कोर्ट ये तभी इशू करता है जब कोर्ट एकदम सेटिस्फाइड होता है कि हाँ इशू करने की जरूरत है. वरना कोर्ट्स जनरली डू नॉट इंटरफेयर. एक आदमी भले ही बन के मतलब प्रधान, चलो प्रधानपति बना हुआ है, लेकिन पंचायत इंप्रूव कर रही है, रूरल सिचुएशन इंप्रूव कर रही है, बढ़िया चल रही है, गांव की तरक्की हो रही है, तो बने रहने दो उसे प्रधानपति, राइट? कोई दिक्कत नहीं है. So that is what quo-warranto is. I hope everything is clear. Now we have practice sets. This is your homework. I have given you a lot of homework. You have to do it. कल तक वो homework हो जाना चाहिए 100%. These are the questions that you are supposed to solve on your own. इसमें answers भी दे रखे हैं. I could not really do anything about it. But I have to show you all these slides. Otherwise, you won't be able to access them. Now, there are certain sets. Please solve these sets and inform me whether or not you have completed them. And I shall meet with you very, very soon. Miscellaneous is my last session. I would be starting miscellaneous a little bit early. मैं पहले ही बता दूँ 9 पे क्लास शुरू होती है. I might start that class at 8:30 and I'm informing it right now because I need at least 2 hours in that class. वो last session है. मैं जितना बढ़ा सकती हूँ, जितना रिवाइज करवा सकती हूँ, मैं करवाना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे टाइम चाहिए. इसलिए ये क्लास जल्दी शुरू होगी. So everyone, please take care. All the doubts, let's handle them on the portal. It's already 10:30. Time for me to go. Time for you to rest. And we shall meet, guys. Nobody leaves without a like. Everyone take care. Bye-bye. And good night. Thank you.